1947 में when we became independent, Makes आधे sense. लोग 30 to 33 की उम्र से पहले मर जाते थे. जो लोग बचते थे, they already had very strong genes, very good metabolic rates and stuff. So the chronic condition was not really a issue. We have more than 1400 doctors across North India. Total 60,000 plus patients registered on our platform until now, and we are currently providing care to more than 5,000 patients with Very nice. around 4,500 being added monthly. We are competing with Google here. We want to answer the question faster than Google. We Correct. want to make it more actionable. Third point of how we are solving this is by making it personalized. So ये तीन चीज करके बहुत इजीली मैं तो चाहता हूँ गूगल रिप्लेस हो. लॉट ऑफ आवर यूजर्स डॉक्टर्स आल्सो वांट गूगल रिप्लेस. उनकी भी बहुत बड़ी सरदर्दी है. वी लॉन्च्ड इन मे. बहुत स्क्रैपी सा हमारा कुछ एमवीपी था जो आधे टाइम चलता भी नहीं था. 60 डॉक्टर्स स्टार्टेड यूजिंग इट एंड इट रियली टुक ऑफ. We were doing about 400 500 consultations a month. I think people management is the least talked about topic in the entire startup ecosystem. I see podcasts around product, around tech, how to conduct user interviews, how to do this, how to do that. No one talks about people management. Welcome, Divansh. It's a pleasure to have you on the V Show. Divansh and Aman, who are the two co-founders of Curelink, have spent the last 2 years in devoting their time enhancing the healthcare ecosystem in India. Primarily, they offer, lifestyle guidance and ecosystem development for chronic patients and help design their lives better by providing them the right kind of routines, the right kind of care they need, which of course the doctors are not able to fulfill because of a lot of demand which exists in healthcare. Over to you, Divyansh. I'll give it to you to share more about CureLink, and personally very, very inspired and excited about what you are doing because it has a lot of direct impact on the lifestyle of people in India and of course the country. So would love to know more. Great. So thank you for having me, Vaibhav. Purely का concept थोड़ा समझाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है. I'll start with Okay. something very basic. There is a very big component of lifestyle management that is there in when we talk about any chronic condition like PCOS, hypertension, diabetes, to certain extent pregnancy as well. There's a lot of changes that the person needs to make in their diet and their exercise routine. In their mental health also takes a very big toll, so that management of mental health also becomes a very big aspect. The problem in India Mm-hmm. is that since the number of doctors are so few and the number of patients are so high, that the doctors simply don't have the time to cater to all of these extra needs that are there for of the patient. And since chronic care burden is increasing in India, this transactional model of आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको एक पर्चा लिख के दे दिया and वो दवाइयाँ आपने खा ली, is sort of failing. And in the Western society, there's a very mature ecosystem. People have dietitians, people have physios, yoga teachers, and stuff, which are provided by the HMOs. In India, we simply don't have that ecosystem. The doctors, they don't have Mm-hmm. that facility to provide. So we essentially become their care team, and Mm-hmm. the doctors then they are able to provide that proper lifestyle support to their patients. हम उनके योगा टीचर्स बन जाते हैं, हम उनके डाइटिशियंस बन जाते हैं, and जो भी पेशेंट्स उनके पास Mm-hmm. आते हैं उनको फिर ये सारा गाइडेंस हम प्रोवाइड करते हैं. Now we started out 2 years ago. We've launched in gynecology. We have more than 1,400 doctors across North India, Oh, and very. we have had total 60,000 plus patients registered on our platform until now, and we are currently providing care to more than 5,000 patients active, with Very nice. around 4,500 being added monthly right now. Just to give a sense of the problem we are trying to solve, there's a very good example that I give. Suppose, Vaibhav, I am a doctor, you came to me and I diagnosed you with hypertension. Now, within a 5 to 10 minute consultation, first of all, I'll break this good news to you कि hey, you have Yeah. hypertension. आदमी की आधी तो वहीं फट जाती है. ठीक है. Hmm. फिर उसके बाद I'll again go on a rant. I'll tell you कि okay, this is a lifestyle condition. You need to do so and so. Hmm. आज से आपका तला तला खाना बंद. आपसे आज का नमक वाला खाना बंद. रोज वॉक करना है. ये 4 दवाइयां हैं. ये ऐसे ऐसे खानी है. एंड दिस बिकम्स वेरी लाइक ओवर पावरिंग फॉर द पेशेंट. एंड जब वो 10 मिनट के बाद बाहर जा रहा होता है ना, तो उसके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा होता है कि यार
मेरी डाइट में से अगर तला और नमक हटा दिया जाए तो बचता Hmm. क्या है? Hmm. इंडियन डाइट में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली कम अप विथ व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट, एंड दीज काइंड Hmm. ऑफ स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस एवरीवन हैज. Hmm. Curelink simply becomes a medium for them to ask those questions. We are a WhatsApp based solution. उनके पास एक WhatsApp chat होती है जिसपे सारे experts होते हैं, उनसे Hmm. वो कुछ भी पूछ सकते हैं. And yeah, the team is available to answer all the And questions. so basically, CureLink is offering an extended team to the doctors in a way, right? And of course, Exactly. enabling it through tech, etc., जिससे आप scale कर सकते हो. But how do you collaborate with doctors here? I mean, it's very interesting, first of all, because I can tell you, seeing such kind of news coming in, especially in elderly people and of course mid-age people in we have all of them in our family right here and there, and it really becomes a matter of concern to handle this, right? So while I understand that you are providing a strong support and team, right, but now the question is that, okay, I trust the doctor, but how are you building that gap and that trust with the experts you are bringing along? Is it because of their industry expertise and experience, or the doctor manually verbally, let's say, recommend saying that now this is a team which will take care of her? So how does the flow look like? So first of all, this entire platform is white labeled. We don't say कि we are a Curelink's care team. We say Dr. XYZ, Dr. Webhouse care team. So this Okay. is sort of like a service that we provide to the doctors, and then they can Hmm. extend it to their patients. Okay. So essentially, in that regard, we are borrowing the doctor's trust. आप अपने Hmm. डॉक्टर पे ट्रस्ट करते हो, डॉक्टर आपको ये बोल रहा है इसलिए आप करते हो. Got it. समथिंग वेरी सिमिलर टू हाउ यू बाय मेडिसिन. आपको एबीसी नहीं पता Fair. मेडिसिन का, बट डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, यू बाय देम. समथिंग वेरी Correct. सिमिलर. So doctor's trust is being used here. And of Yes. course, if I trust the doctor, then I'll trust all the services and let's say the Yes. Yes. recommendations the doctor will provide. Yes, and obviously we work a lot with the doctor when onboarding them onto a platform. When we sign up a new doctor, we work a lot. We customize the plan Hmm. according to them. We have been working on this since 2 years, so we have the strong SOPs कि यार ये डॉक्टर अपने पेशेंट्स को दूध देना चाहता है कि नहीं चाहता. We have a Hmm. very standardized questionnaire. We have their standard. We take their information. We sort of become their care team. It's like a Shopify like experience कि आपके अराउंड हम आपकी प्रैक्टिस के अराउंड बन जाते हैं. So Hmm. that helps building a lot of trust with the doctors, and hence they let us use their name as well. Very nice. And how long does it take for a doctor to onboard right now? I mean, that's the biggest challenge that we're trying to solve in our to unlock Yeah, the because next I phase of think growth. there will be a curve, right? That Yeah. you hit some layer, then there is a step function, then again and Hmm. again. So first of all, the acceptance rate is extremely high. If I go and talk to Hmm. 100 doctors, 75 doctors actually sign up on the platform, Okay. which is amazing. They are recognizing that there's a need of such tool. But what happens is that trust building wala jo process hai na, that takes a lot of time, simply because Acha. doctors are very busy. And for Hmm. me to build that trust with the doctor, I need to spend like 2 to 3 hours with them, like sort of, and make them understand the whole process, the qualifications of my care team, customize my care plans accordingly. Hmm. So that takes a little bit of time. Overall, within 2 to 2.5 months from saying hi to a new doctor, I am able to confidently say कि नहीं यार ये अब अपने सारे पेशेंट सबको रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा. Got it. And do they start recommending all of them, या फिर कि भाई मैं 50% ही करूंगा या अभी कुछ सीवियर केसेस ही करूंगा एंड लेट मी सी, वो लोग भी तो कुछ अपना मैट्रिक्स लगाते ही होंगे. Yeah, yeah, obviously. It's a see, doctors are very good at analyzing the acceptance of the patient in terms of Hmm. the spending that he or she is willing to do, because Hmm. that is their day-to-day life, right? Hmm. So, first of all, they don't want to overburden patients who do not have the paying capacity. वो उनको bare minimum ही देते हैं because they understand कि hey, they don't have the money. Secondly, they in the initial days they have this internal filter कि any patient who requires these kind of services or is very excited to try out these services. For example, we are in pregnancy. Pregnancy में Hmm. Garb Sanskar is a major craze right now, or everyone wants to do prenatal yoga to optimize their chances of a normal Hmm. delivery. So patients who are more Hmm. excited about these things, those are the ones the doctor starts adding in the initial days. Got it. And how's the monetary model here, right? So you monetize directly the doctor, and the doctor might be charging some part of it through the patients or covering some part of it through the patients. No, actually, the we have a freemium model
in Okay. place. So the doctors, they can register any patient they want. And we have, Hmm. see, you got to understand, for someone to successfully manage their chronic condition, they need four things. They need education. Education is a very big pain point in India. They need proper support. छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, मैं ये खा लूं कि नहीं खा लूं, मैं ये कर लूं कि नहीं कर लूं. देन दे नीड प्रॉपर काउंसलिंग. मेंटल हेल्थ इज अ बिग Hmm. इशू. डाइट से रिलेटेड बहुत जल्दी गिव अप हो जाता है, वो सारी चीजों का. एंड देन दे ऑल्सो नीड टू, समवन नीड्स टू इंश्योर कंप्लायंस, कि यार डांट पड़नी चाहिए अगर आप कुछ ना करो तो. समझ रहे हो आप? Hmm. सो फ्रीमियम मॉडल है. द एजुकेशन एंड द सपोर्ट पार्ट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. वी सेंड देम रेगुलर केयर टिप्स. देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड गाइड ऑन Hmm. हाउ टू मैनेज अ कंडीशन that we send regularly to the patients on WhatsApp. And they can also ask any lifestyle related question and we'll answer them free of cost. Okay, so the doctors can register any patient and these two things happen to them automatically. And then if the patient is interested, they can buy any of our services, which are, online yoga classes or dietitian Okay. consultation or mental health consultation. And that is how we make money. Got it. So it's not that डॉक्टर ने आके बोला कि अच्छा मेरे से $1,000 ले लो, let's say for 50 customers, and you hold the entire journey of theirs. Not like that. नहीं, The ये नहीं customer होता. will directly pay you, Yes, and the yes. doctor onboarding is free. Yes. I mean, Indian It's mindset, also good in that sense, no? Because then you have that liberty कि scale के साथ तुम unit पे मतलब your unit is your like one patient is your unit, right? So yeah, if that scales for a doctor, then you will actually earn more if you are able to provide and convert that patient. And which is also the true exactly. test because then वो नहीं है कि business model में गए ना कि आपने जाके एक service deal कर ली, now you have let's say a subscription या recurring bill of 3 years or 2 years or so या monthly आपको पैसा आ ही रहा है. Now it will mean कि every patient is actually going to test you and see if you are providing enough value Hmm. and then only will pay कि अगर उनको ROI दिख रहा होगा कि यार मैं 100 रुपए दे रहा हूँ बट मेरे को 100 रुपए की वो वर्थ वैल्यू मिल भी रही है इस प्लेटफॉर्म से तो दैट मेक्स इट हार्ड फॉर यू बट आई थिंक दैट्स अ गुड वे बिकॉज यू देन योर सिस्टम विल बी फ्री ऑफ एनी gaps, any leaks, and we'll have faster iteration and feedback loops, which is good. Exactly. And this also reflects a very shrewd insight into the customer behavior. जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमसे ना बहुत सारे पैसे खर्च करवाने लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता. Hmm. एज कंज्यूमर्स, एज पेशेंट्स, अगर दवाइयाँ भी उसी के क्लिनिक पे मिल रही हो, टेस्ट भी उसी के Hmm. क्लिनिक पे हो रहा हो, तो हम तो पता नहीं, बट हमारे जब मॉम डैड की जनरेशन के जो लोग हैं, वो बोलते नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं लूंगा, मैं अपने दोस्त के Hmm. यहाँ से ले लूंगा. Correct. सो वो दैट स्पेंड जो होता है ना पूरा, इवन इफ दे वांट टू स्पेंड, दे डोंट वांट टू स्पेंड इट एट सेम टाइम. कि एक बार क्लिनिक में गए आप, Hmm. 7-8 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए खर्च करके आ गए. वो Correct. पेशेंट बिहेवियर नहीं है. इसलिए क्लिनिक Hmm. पे कलेक्शन ऑफ दीज काइंड ऑफ सर्विसेज बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट. Got it. Got it. Hey, yeah, very fair. And how many cities are you active in? You said that you have around 60,000 patients registered या, till now. So, like, how is the like city वी wise हैव distribution here? 1400 डॉक्टर्स हैं हमारे पास. वी आर प्रेजेंट इन एनसीआर एंड Okay. जयपुर, लखनऊ, कानपुर, इंदौर, एंड वी रिसेंटली ओपनड अप चंडीगढ़ एज वेल. Got it, got it. And how is the forward plan looking like? Like you're going to expand into further cities, of course, but is there any target which you are chasing that we'll be like pan India or so in a year, in 2 years or whatever? I mean, we are razor focused on gynecology right now. Obviously, Okay. there are other specialities in which we can add values, but we are focused on Hmm. gynecology. We just want to go deeper here. We want to reach a target of 5,000 monthly active gynecology doctors on our platform, and we want to Okay. do this in the next 2 years. That and this is irrespective of city. I mean, you are okay doing this with only NCR, or you say कि नहीं breadth नहीं नहीं बढ़ाएंगे? नहीं 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 नहीं, we'll obviously increase the breadth. We'll go into Pune, we'll go into Mumbai, we'll go into Ahmedabad, Hmm. we'll go into Bhopal, we'll go into other cities I that think are then there in probably Himachal then region. starting with the metros and then diving into the next layer. Is it? I mean, we opened up Kanpur after NCR, and the reason Mhm. why we did that was because we wanted to make sure that this is not a product that just gets limited in the tier one cities. Okay. And that is why we are fundamentally based on WhatsApp. I mean, it's a huge limitation, and cross-selling के potential बहुत कम हो जाता है. Patient
एक्सपीरियंस हम्म, बहुत लिमिटेड हो जाता है, बट वी हम्म, वांटेड टू डू इट ऑन व्हाट्सएप बिकॉज एवरीवन गेट्स टू यूज व्हाट्सएप, हर किसी को चलाना आता है। तो जब हम करेक्ट। कानपुर में जाते हैं तब भी हमारा ड्रॉप ऑफ कम नहीं होता है। इनफैक्ट my English speaking users in NCR, the chances of conversion to a paid plan is around 22-23%. And in Kanpur, my Hindi speaking users, when I provide them the content and the whole experience in Hindi, the chances of conversion is 27%. The Oh, acceptance rate there is higher than what hmm, we are seeing in NCR. So limited nahi hai tier 1 mein, but there's a very big limitation of language in India. So we correct. just want to stay in a Hindi speaking belt until we hit this milestone of 5,000 doctors. Got it, got it. Makes sense, yeah, because then you'll have to develop those vernacular capabilities across all your Yeah, I mean, ecosystem. I mean, it has a lot of ops slash tech related challenges to overcome, but fair enough. hmm, hmm. Cool. सही है यार, very nice. I think I really believe कि as a generation which is expanded sedentary lifestyle, these issues and health related concerns are really becoming a major challenge for all of us. And Actually, Weber, it's not just sedentary lifestyle. I mean, a mm, lot of people think that हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, इसकी वजह से हेल्थ केयर पे क्रोनिक केयर का बर्डन बढ़ रहा है। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट है, 1947 में when we became independent, do you know what was the average life expectancy of an Indian? it would have been around 50 max. It was 32.7. Yeah, I mean, makes आधे sense. लोग 32-33 की उम्र से पहले मर जाते थे, ठीक है। Hmm. जो लोग बचते थे, दे ऑलरेडी हैड वेरी स्ट्रॉन्ग जीन्स, वेरी गुड मेटाबॉलिक रेट्स एंड स्टफ, सो chronic condition was not really a issue. What is chronic condition? Chronic condition is my body failing because I'm not taking good care of it. लाइफस्टाइल मेरी Correct. इतनी सेडेंटरी है, एक्टिव नहीं है, तो बॉडी बोल जाती है, राइट। जब आप 32 के पहले ही मर रहे हो, सो डायबिटीज का तो सीन ही नहीं है ना। Hmm. But Hmm. now, since the average life expectancy is increasing, we have reached 70 years, I'm sure. 69 point something था the last I checked. Hmm. So people are living longer, their body is living longer. So वो chronic conditions, जो वो body running out वाली scene है, that is increasing. And that is Hmm. why the healthcare burden is also increasing. Sedentary lifestyle Hmm. is also there, no doubt. But I think that plays a little bigger part. Hmm. No, yeah, thanks for correcting me. This is a strong insight, and I think I fundamentally believe that we all should be taking a lot more care of our health. But वही है ना कि everyone is in that chase कि life में कुछ करना है. There are so many other things to take care of, and Yeah, especially in India where we all like अगर आप तुम देखो the average income of an household and so on, so everyone's primary agenda and motive in life is कि भाई bread and butter earn कर लेते हैं, so health hmm, always takes a back seat for adults. But good, yeah. I mean, really, really excited by how CureLink will, of course, impact more and more people because we need this. We need a stronger healthcare ecosystem. We have seen that even in times of COVID, how it collapsed. And this, in a way, is, of course, making India healthier and stronger. So kudos to that. I want to move on next to discuss and know more from you about the origin story of CureLink. Now, I know, and everyone knows now कि CureLink क्या कर रहा है, but I also know there's a fun origin story and the kind of experiments you have run before actually going deep here. So, इसके just बात तुम लोगों ने start किया था ना? yeah, I mean, so I graduated from college in 2020. I was the first batch of COVID graduate. Hmm. मार्च में I was in college, होली आई, I was like कि 2 दिन में फटाक से घर जाके वापस आना है, फाइनल सेमेस्टर है, पार्टी करेंगे। Hmm. Hmm. वो 2 दिन अभी भी चल रहे हैं। Never really went back to college. So Hmm. the final semester of college, the life was happening. बहुत मजा आ रहा था, बहुत fun हो रहा था. I was the president of student body there, so the life was उस Okay. angle से भी very happening. And then everything came to a grinding halt. एकदम घर पे आ Hmm. गए, कोविड हो गया, बंद है. So it was a very big shock in my lifestyle and I realized कि यार क्या मुझे normal job करनी है, नहीं करनी है. That gave me a lot of time to think and we realized कि नहीं यार, नहीं करनी. I fundamentally want to do something, some big impact creation वाली साइड जाना है. थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं लाइफ में, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा वाला थोड़ा माइंडसेट हो गया था मेरा. Correct.
So yeah, we started exploring. I mean, and there were some cousins जो कि डॉक्टर थे, so उनके साथ hang out करना start कर दिए. And then Aman also came. Aman was also here in Bhatinda, पंजाब में थे वो, तो उनको भी मैंने कॉल किया कि क्या कर रहे हो पाजी, चलो कुछ करते हैं. उनको भी थोड़ी चुल तो थी स्टार्टअप की. Yeah, he previously worked at FamPay before joining Microsoft, so he knew कि how fun startups are and कैसे मजा आता है करने में and काफी बढ़िया होता है. So Chul was probably the reason why we started exploring. But then COVID was there, healthcare was all the rage. We started exploring things in healthcare. We realized कि यार chronic care में ना बहुत बड़ा scope है. People are simply not able to follow up with their doctor, and कोई ना आपकी कोई भी कंडीशन होती है तो उसमें ना ऐसे काफी आपको फॉलो अप करने होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रांसप्लांट सॉरी आपकी एंजियोग्राफी हुई है, या आपको किडनी फेलियर है, या फिर आपको डायबिटीज है, टाइप ए डायबिटीज है, सो यू हैव टू फॉलो अप विद द डॉक्टर रेगुलरली. एंड टीयर 3 टीयर 4 में ना डॉक्टर्स होते नहीं है, स्पेशलिस्ट तो नहीं होते. सो वी स्टार्टेड आउट विद फुलफिलिंग दैट गैप कि वहां पे हमने टेली कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, वो क्या कहते हैं, हमने वहां के लोकल लैब्स में एक रूम लिया, उसमें हमने टेली कॉन्फ्रेंसिंग का पूरा सिस्टम लगाया, एक बड़ी सी स्क्रीन, कैमरा वैमरा. And the guy, the lab technician from there used to assess the patient, and the patient used to consult with the specialist doctor in tier 1 and tier 2. So ये टेलीक्लिनिक के कंसेप्ट से हमने स्टार्ट किया था. दिस एक्सपेरिमेंट वी रैन फॉर अबाउट 1 year फ्रॉम 22. मीनवाइल आई हैड जॉइन माय जॉब. अब मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट हाँ, नेवर रियली लेकिन निकाल गॉट. लेंगे। So never really got into that whole vibe of job वाली चीज. 3-4 महीने करी, हम्म then I quit my job in March and started doing this full time. वो टेलीक्लिनिक वाली चीज कर रहे थे, but the unit economics was just not making sense there. हम्म And problem क्या हुई कि कोविड जब सेकंड वेव आई ना वैभव, so this time COVID had actually reached these tier 2 tier 3 cities, and all our जो हेल्पर्स थे जो वहां पे वो टेलीक्लिनिक्स चलाते थे, they got drafted into COVID duty. एंड हम्म आर ऑपरेशंस केम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट. मतलब हम हम्म महीने के कुछ 400 450 पेशेंट्स का कंसल्टेशन कराते फ्रॉम आर 5-6 क्लिनिक्स. दैट केम टू जीरो. वी हम्म स्टार्टेड गेटिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम these पेशेंट्स कि अरे डॉक्टर से बात करवा दो. So we started doing those consultations on WhatsApp, and much to our surprise, everyone loved it. I mean, they loved the fact that they did not have to go to that center and वहां से करना पड़ा डॉक्टर से बात. So our entire thesis was कि वो experience चाहिए लोगों को, नहीं हम्म चाहिए. WhatsApp was very easy, and that is how our WhatsApp वाली journey started. So एक के बाद एक कुछ तो कुछ होता गया. We just kept talking to हम्म users, we just kept iterating for PMF, and वही. सो यहाँ से व्हाट्सएप वाली इंसाइट मिली कि बॉस, इंडिया का हेल्थ केयर ना व्हाट्सएप पे चल रहा है. मतलब इतने सारे टेलीक्लिनिक सॉफ्टवेयर थे. दिस वाज पीक कोविड, but everyone was doing WhatsApp consultations. The doctors were asking for fees on Google Pay and then getting हम्म screenshots. So prescription की फोटो खींच के भेज दिए. सो ना पूरा सिस्टम व्हाट्सएप पे था. देन वी थॉट कि एक काम करते हैं, इसको थोड़ा आसान बनाते हैं डॉक्टर्स के लिए. So we created Curelink, which was like a custom client for doctors to facilitate these teleconsultations in a easier manner. कि मतलब ओके पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन है, प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन है, फॉलो अप रिमाइंडर्स हैं. Like without sharing their personal number, they can get connected to the patient on WhatsApp. ये सारे फीचर्स थे, एंड इट रियली टुक ऑफ. आई मीन वी लॉन्च्ड इन May. बहुत स्क्रैपी सा हमारा कुछ एमवीपी था जो आधे टाइम चलता भी नहीं था. 60 दैट्स हाउ डॉक्टर्स एमवीपीज आर 60 doctors started using it, and it really took off. We were हम्म doing about 400-500 consultations a month. That is when we raised our seed round, and then COVID also went away. और हाँ जो हमारा वो ट्रैक्शन था वो सारा उड़ गया, क्योंकि अब तो डॉक्टर के पास पेशेंट आने लगा ना. करेक्ट ऑफलाइन जाने लगा वो उसको एक्सेस मिल ही रहा था यस, यस. हम्म सो देन वी डिसाइडेड कि यार ना डॉक्टर को कुछ ना वो देते हैं, मोटिवेशन देते हैं अपन पेशेंट डालने का इस पे. सो वी हम्म बिल्ट ये पूरा हमने ना केयर टिप्स वाला कंसेप्ट बनाया कि पेशेंट्स को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर का दिमाग खाते हैं, तो हम ना केयर टिप्स बना देते हैं. वो हम्म हमने केयर टिप्स बना के लॉन्च किए. वी जस्ट डाउनलोडेड 2-3 एप्स, उसको फटाफट हमने स्क्रीनशॉट इनशॉट लिया. एमवीपी बनाना था फटाफट, हम्म and we just launched a very scrappy MVP here in Gurgaon with 10 doctors gynecology में pregnancy में. That also took off.
तो हम्म फिर वो हमारा बनना स्टार्ट हुआ। दिस वाज इन दिसंबर ऑफ 21, यस, जब हमने लॉन्च किया था विद 10 डॉक्टर्स। विद इन 2 months वी हैड 30 डॉक्टर्स गेटिंग 20-25 पेशेंट्स ऑन अ डेली बेसिस। देन डॉक्टर्स ओनली सजेस्टेड अस कि यार ये ना योगा टीचर्स चाहिए होते हैं पेशेंट्स को, डाइटिशियंस चाहिए होते हैं, तुम ये बनाओ, हम्म कुछ प्लान व्लान बनाओ इसका। सो दैट इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ प्लान वाज बॉर्न। वो हमारा मोनेटाइजेशन प्ले हो गया फिर। So it was a very organic journey. We never really set out to do this. And if, had you asked Aman and Divyansh of 2020 कि यार तुम कुछ ऐसा करने वाले हो, तो I don't think we would have ever come up with this answer. नहीं यार, I वेरी think इंटरेस्टिंग एंड द रियली लाइक द फ्लो जो तुमने बोला बहते गए, बिकॉज आई थिंक पीएमएफ एंड इवन द कंपनीज विच लास्ट लॉन्गर or which are built in the right fashion always take care of their customers, right? Always literally hold the nerve of their customers. In your case it has been great in the sense कि पहले कोविड हुआ तो तुम्हें पता ही था क्या हो रहा है। व्हेन कोविड वेंट अवे तो तुम्हारे पास डॉक्टर्स थे जो तुम्हें वो इनसाइट देते गए, एंड देन यू बिल्ड दैट टू वे ब्रिज, राइट, विच इज नाउ ग्रेट। एंड आई फील कि यार कोविड तो चलो एक सेक्शन था बिकॉज तब, बट इवन मूविंग फॉरवर्ड क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज इज देयर, गाइनो इज देयर, एंड ऑफ कोर्स मेनी अदर्स, कि यार लोगों को परेशानी रहती है, राइट? एंड अब आज की दुनिया में लोग क्या करते हैं कि भाई जाके सब कुछ गूगल पे सर्च कर लो और उल्टा सीधा पढ़ लो और लाइक फ्रीक आउट होते रहो। एंड Google तो देर इज बहुत बड़ी देर इज प्रॉब्लम है। दिस नीड कि भाई कोई मेरे को सही बंदा तो बताए, क्योंकि गूगल पे तो तुम्हारे को सर दर्द हुआ है तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है, राइट फ्रॉम अ नॉर्मल गट इशू टू कैंसर। सो हम्म। एंड ऑफ कोर्स as overthinkers we would always like to think of cancer, दिस not इज the दिस इज normal. दिस इज अ वेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। सो क्या होता Yeah. है कि छोटी छोटी चीजों के डाउट्स होते हैं यार। मतलब वी हैंडल प्रेगनेंसी पेशेंट्स, पपीता खा लूं कि नहीं हम्म खा लूं, मेरे को दर्द हो हम्म रहा है, मैं क्या करूं, अब रात में 10 बजे इसको भाई याद आ गया कि इसको दर्द हो रहा है। एंड हम्म पीपल, मैं तो ये सोचता हूँ मेरा अल्टीमेट वर्जन प्रोडक्ट का ये है कि अगर मैं पेशेंट हूँ तो मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है, और हम्म जितना मैं उनको अच्छे से ईज से क्वेश्चन पूछ पाऊंगा व्हाट्सएप पे, और जिस एक्सपर्टीज के साथ, जिस नॉलेज के साथ वो मुझे आंसर कर एंड पाएंगी, जिस ट्रस्ट के how साथ। yes how do I build that experience for each and every Indian in India? So हम्म there are three things that we want to do, which I always say to my team: we are competing with Google here. We want to answer the हम्म question faster than Google. We करेक्ट। want to make it more actionable. Google की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो actionable आंसर नहीं होते हैं, right? You get हम्म blogs, you get a lot of articles wherein you go एंड आई and थिंक decide what to मोर do. इवन मोर देन आर्टिकल्स, हाउ डू यू ट्रस्ट, मतलब ठीक है, मतलब एक्यूरेट एक्शन भी मिल गया अगर, हाउ डू यू ट्रस्ट कि यार ये जो सजेशन दिया है वो सही भी है कि नहीं? वो तो पैसिवली किसी Exactly. ने लिखा था, लिख दिया, Hmm. उसका मन था उस दिन। अब मतलब Hmm. नॉट दैट ऑल एवरीथिंग इज रॉन्ग, बट देन आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट, राइट? Exactly, and that exactly we build trust by coming to the third point on what how we are solving this is by making it personalized. Since I हम्म know your profile, since I know you, since I know कि इस patient को diabetes है नहीं है, thyroid हम्म है नहीं है, I am able to tweak the answers in that certain manner, right? So हम्म ये तीन चीज करके बहुत इजीली, मतलब मैं तो चाहता हूँ गूगल रिप्लेस हो। A lot of our users, doctors also want Google replace हो, उनकी भी बहुत बड़ी सरदर्दी है। Correct, correct. Fair, yeah, very nice. I also wanted to, speak about how you guys are, I would say, leading there in terms of utilizing AI to actually bring relevant solutions and impact in healthcare, right? When I, for example, जब ये AI का the whole hype up began, right? Chat GPT launch हुआ और ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है, in my head from a longest term, right, if I reduce all the faff which is happening कि ठीक है ये बना दिया वो बना दिया, I think healthcare is that one segment जहाँ पे there is so much we can do utilizing AI, not only from a software lens but also through bringing more hardware advancements and so on and so forth. I know that you are anyways utilizing AI to help Hmm. people get better results, better responses, and better resolution, right? But how do you think of it, and how are you planning to utilize AI further in your journey? See, there's a very, very gap in the doctors to the patient ratio in India. So the doctors, they are Hmm. not available to the patients for a longer period of time. You see consultation times in US and UK, they last
I mean, US, I know for sure they last 30, 35 minutes for most part in healthcare, chronic conditions. And the number of patients that a doctor sees on a daily basis is 5-6. These are superstar doctors. इंडिया में अगर कोई Hmm. डॉक्टर 5-6 पेशेंट देखता है तो उसको बोलते हैं लोग इसकी प्रैक्टिस स्ट्रगल कर रही है अभी. Right. So doctors are not able to provide a lot of time. So they just like give the high level guidance and then they prescribe the medicines. So I think in healthcare, AI, specifically speaking, Gen AI, LLMs, they can fulfill that gap of guiding that patient, answering the small questions, essentially what we are trying to do. But the problem Hmm. there is, again, it's not specific. How do I make it so that the system that I have built understands the patient completely? उसकी जो बेसिक्स हैं वो उसको पता हो कि इसको जेस्टेशनल डायबिटीज है कि नहीं है, इसको पीसीओएस है तो किस टाइप का पीसीओएस है, लीन पीसीओएस है या ओवरवेट पीसीओएस है, या फिर इसके गोल्स क्या हैं लाइफ में जो ये अचीव करना चाह रही है. ये सारी चीजें मैं उसको कैसे एलएलएम को समझाऊं, ये एक बड़ा चैलेंज हमको आता है. एंड जो दूसरा चैलेंज आता है वो ये है कि हाउ डू आई मेक इट स्पेसिफिक. सो Hmm. since all the foundational LLMs out there, they have a lot of guardrails. They do not like giving specific advices to the patients, to anyone basically, कि आप ज्ञान ले लो बट मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप ये कर सकते हो. एंड वी Hmm. वांट टू ब्रिज दिस गैप बाय इन्फ्यूजिंग आवर ओन नॉलेज कि यार हमें पता है ना, हमने ये 50-60 हजार पेशेंट्स के मोर देन 6.5 लाख चैट्स करी हुई हैं अभी तक, question answers Hmm. किए हुए हैं in the 2 years. So we have that data. How do we leverage that data to give those specific answers to the patients? The Hmm. one thing that we are trying to solve to answer your question in short is how do I provide support? Hmm. वही वो आपकी दीदी डॉक्टर है और वो आपको आंसर कर रही है हर छोटी छोटी चीज का. हाउ डू वी बिल्ड दैट using LLMs? That is the end goal. That is the pipe dream for CureLink right now. अभी हम यूज कर रहे हैं बट इट्स ह्यूमन सुपरवाइज्ड. सो द होल सिस्टम generates a response, then my dietitians they evaluate whether that response is good or not and then date accordingly and send it to the patients. So this way it's sort of like a very crude way of human reinforced learning. हम वो डेटा जनरेट करते हैं फिर उसको फीड करके फिर से हमारे Hmm. रिस्पॉन्सेज बेटर करते हैं. बट इवेंचुअली आवर गोल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इज टू हैव about 80% of the questions being sent to the patient without getting edited. That is Oh, what we very want to nice. achieve. And, see, this becomes like a very beautiful system for data generation from an LLM Correct. perspective. I get very excited when I think about it कि साला अपने आप जनरेट हो रहा है और Hmm. ह्यूमंस उस पे कुछ वैलिडेशंस भी लगाते जा रहे हैं. एंड आई हैव दिस अमेजिंग लाइक पॉजिटिव फीडबैक लूप जो कि उसको बेटर करता जा रहा है. Just yesterday, I mean, we hit a milestone of answering 3,000 queries in a day. Oh, very nice. 3,000 दिन की है. And how many people are supervising that? Oh, very nice. Very So we have nice. built a system in such a way ना कि उनको बहुत ज्यादा टाइप नहीं करना पड़ता. करेक्ट हाँ मतलब अगर वो इंटेलिजेंस है ही अपने पास दिस शुड बी द केस राइट कि बट आई थिंक यू द एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद यू दैट व्हाट यू आर पुशिंग हैज बीन वेटेड बाय दिस पर्सन हु इज सेंडिंग इट आउट. Yes, yes. And we take that responsibility very seriously. All of these, the two people that I'm saying, these people are proper professional dietitians who have done their masters and have received extensive training on what are the protocols. We actually have a very strict protocols on what kind of answers we can do and we cannot do. So वो सारी चीजें बहुत सीरियसली लेते हैं भाई इस चीज को हम. एंड नहीं यार ये तो तुम बहुत ही वो सारी सीरियस चीजें. बिजनेस में हो दैट वे तो इट शुड बी देयर कूल यार दिस इज योर फर्स्ट स्टार्टअप राइट you are a first time founder now folks and friends now starting up right मतलब generally लोग 3-4 साल जॉब करने के बाद भी स्टार्ट कर लेते हैं कुछ लोग just after the college कुछ लोग so there is a entire spectrum but if you see lot of people there is a you know saturation बोल दो या peak बोल दो which comes around 27-28 years of age जहाँ पे मैंने देखा है कि lot of friends start diving into the startup ecosystem space nothing generic there but that just means कि a lot of our peers are now starting up right if let's say for someone like that watching this episode if I were to ask you कि दिव्यांश लास्ट 3 साल में क्या टॉप 3 चैलेंजेस रहे यार एज अ फर्स्ट टाइम फाउंडर जो तुम्हें अब लगता है कि भाई मैं अब वापस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ ना तो ये तो मैं रैंडम शिट नहीं करूंगा ये तो सॉल्व कर लिया है व्हाट वुड दैट बी. यार देखो वैभव, टॉप नंबर पे ना मैं एक ही चीज रखूंगा. पीपल Hmm. मैनेजमेंट. आई थिंक पीपल मैनेजमेंट इज द लीस्ट टॉक्ड अबाउट Correct. पिक.
in the entire startup ecosystem. I see podcast around product, around tech, how to conduct user interviews, how to do this, how to do that. No one talks about product, like people management. People Matlab, management, correct, it's a very daunting. So I started out when I was also 24 years old, right, and correct. had barely been in 5 months in the job. So getting someone to come to the office in the morning and then, getting them to work with you, what are With the this tricks same kind tricks of of the inspiration, yeah, what are the energy. tricks and of the trades that you use, वो बहुत मुश्किल होता है यार figure out करना. For example, the first time you walk into a meeting wherein you have to do a performance review, क्योंकि अब उसको Hmm. आपको वो देना है, क्या कहते हैं, Appraisal. इंक्रीमेंट देना है या अप्रेजल देना Hmm. है, या you have no playbook for that, right? And it becomes easier once you have been in the industry for a very long time. So this was one big challenge that I personally faced as a first time founder. Ki how do I get on this side of the table? How do I operate? How do I manage the people effectively? This was a very big problem. The second big problem that I see a lot of young founders and first time founders make is that they obsess over building the product. Hmm. बहुत अच्छा बनाना है, ये करना है, वो करना है. They just don't like talk to a lot of customers or just don't get to the market fast. I mean, जो तुम बना रहे हो most of the time किसी को नहीं चाहिए यार. उसे कुछ और ही चाहिए और वो Correct. बताने रेडी है कि उसको क्या चाहिए. तुम जाओ बात करो. So two learnings here. I mean, build a super lean MVP and talk to as many users as you can. I mean, there was a brief period of 6 7 months. I remember both Aman and I. So we have made a lot of mistakes and we regularly talk about those mistakes, right? And we Absolutely. realized that there was a period of 6 7 months where we did not talk to a lot of users. After Hmm. this raising the seed round, we were like कि अब तो हम बाप हैं, अब तो हम बनाएंगे कंपनी, बनाएंगे अब तो हम लोग हायर करेंगे, ऐसे ऐसे. So you get into that mode कि यार अब मुझे कंपनी बनानी है. नहीं भाई, Correct. अभी तेरे को यूजर से बात करनी है, अभी तेरे को I प्रोडक्ट think for सही करना me, है. for me, in this way, I at least the mental model and the framework which I have now aligned here is, of course, doing a lot of mistakes. Myself being a first-time founder, कि भाई, the real stakeholder of a business is always the customer. It is Yeah, not the founders, it is not the investor, it is not the market, it is the customer. अगर उसको नहीं चाहिए प्रोडक्ट, तुम्हारे पास कुछ भी है, कुछ नहीं चलेगा. चाहे तुम्हारे पास बेस्ट टेक हो, exactly. बेस्ट बिजनेस हो, बेस्ट लोग हो, नहीं चलेगा. एंड वही. मेरे लिए तो दिस हैज बीन द टॉप मोस्ट, आई वुड से, लर्निंग ऑफ द लास्ट फ्यू इयर्स, कि भाई कस्टमर की नर्व के जितना पास रहोगे, यू विल बी डूइंग ग्रेट, और एटलीस्ट सॉल्विंग द राइट प्रॉब्लम्स. Yeah, and so yeah, the first problem is key people management. The second is that don't get into company building, build the product first, stay lean, don't get into much into कि बनाना है, जाओ और user से बात करो. The third point is hiring. We आई tend थिंक to इज अ want पार्ट to. ऑफ पीपल मैनेजमेंट ओनली, दो वैसे सबसेट है, बट या, बताओ बताओ. मैं थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था, लाइक पीपल अच्छा. मैनेजमेंट वाज कि वो डे टू डे कैसे करवाना है उनसे, कैसे ओके. ओके. आपको ऑर्ग बनानी है, एचआर फंक्शंस हम्म. कैसे काम गॉट करेंगे, इट. लोग खुश नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस हम्म. चाहिए, वो सारी प्रॉब्लम्स. ओके. हायरिंग पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि क्या कौन से लोग चाहिए उन्हें. हम्म. Matlab, in the initial days, I optimized for people who I trust, who are my friends, who are not necessarily the best people to come and build the company or do that particular role. And that backfired spectacularly. I mean, I'm writing down the learnings that I have had in the past 2 years. The number one is that don't hire a bad person in a role. It will set you back at least 1 year. करेक्ट. So what kind of person to hire for the particular role, and more importantly, when to hire. It's very easy to hire early and it's very easy to hire someone जो कि आप ट्रस्ट करते हो या जो आपका दोस्त हो, बट जब परफॉर्मेंस नहीं आती है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है. सो हायरिंग इज ऑल्सो समथिंग दैट वी स्ट्रगल्ड विथ. मैं ज्ञान तो नहीं देना चाहूंगा फाउंडर्स को दूसरे, क्योंकि अभी मैं तो कुछ नहीं उखाड़ा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है. आई थिंक ये सबकी प्रॉब्लम है ब्रो, एट ऑल लेवल्स. एवरीवन हैज दिस चैलेंज कि भाई ये हो गया वो हो गया, बट हायर कैसे करें, किसको हायर करें. हर के अलग अलग कंस्ट्रेंट्स हैं, तो यू हैव to put a lot of fitment checks in place. And I don't think, मतलब, a little ahead
in the journey, let's say compared to you, but even I हम्म, don't have that confidence saying कि भाई वो तो crack कर ही गया है या वो हमेशा ही पता है. Still there's a lot of paranoia around that हमारे every हमारे जो time. चीफ ऑफ स्टाफ है राव, उनकी ना एक हम्म. कहावत है, हम्म. जो तुम्हें चाहिए उसे तुम नहीं चाहिए, और जिसे तुम्हें चाहिए, जिसे तुम चाहिए वो किसको वो चाहिए। किसको चाहिए? ये अक्षय कुमार की कहावत है. वेरी नाइस. हाँ, तो वो हमें मारते रहते हैं जब वो ऐसे हायरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको आती है, तो वही हो जाता है ना, सीड स्टेज कंपनी, यू डोंट हैव शिट फिगर्ड आउट, यू डोंट हैव अ ब्रांड, इट्स अ कांस्टेंट बैटल एंड यू गेटिंग टॉप पीपल टू वर्क विद यू, एंड व्हेन यू डोंट हैव अ prodigy it becomes easier when you are second time founder, third time founder, or you have this big करेक्ट. name in the industry, आपने उखाड़ा हो कुछ लोगों ऑलरेडी को, ब्रांड है, ये बना अदरवाइज चुका है, मुश्किल ये होता है। उखाड़ चुका है. करेक्ट. हाँ, सही है यार. वेरी नाइस. वेरी वेरी रिलेटेबल advice, and I think the most authentic and genuine ones. Thank you Divyansh for doing this यार. बहुत मजा आया. I think people who are starting up, or in fact who are exploring healthcare, would definitely benefit a lot out of it. So thank you हम्म, for sharing your valuable insights. I'll also probably put up your contacts like social connects, etc., in the description so that people can reach out and speak in any case, right? But thanks a lot. काफी fun, काफी learning और बहुत मजा आया. Thank you. definitely, thank you for having me, I had a blast. And any health tech founder who wants to reach out to me, guys, please do. बहुत मुश्किल होता है हेल्थ केयर फाउंडर्स से मिलना, मतलब वी आर अ रेयर ब्रीड, वुड लव टू एक्सचेंज नोट्स, एंड थैंक यू वैभव फॉर हैविंग मी, इट वाज फन। Awesome, man. Yeah.